तो ये बात समझ में आ गई आपको कि जी हाँ। तो जैसे सी की वैल्यू 67 है, इसमें 4 ऐड करेंगे 71 हो ऐड माइनस करके हमारे पास इंक्रिप्शन आ जाएगी। ठीक। अब इसको पढ़ लेगा। ठीक है। To get back to the original message, it will be necessary to apply the same decryption key, that is 429.136.2856. But in this case, the decryption process would be the reverse of encryption, and each letter would be shifted. -4, -2, -9, -1, and so on. For example, G, C, Q, O, V, M, Q, P, and so on. ठीक है। Modern computers could track this encryption key in a matter of seconds. To try to compile this, we use to split binary encryption keys. They are able to 56, approximately 1.0 multiplied by 1077 possible combinations. Quantum computers. So the real difficulty is keeping encryption for SSD. For example, it needs to be sent as one email or text message can be encrypted. Therefore, the social security status similar threat of chemical encryption, since a single encryption key is required for both sender and recipient. Asymmetric encryption was developed to overcome a security problem associated with simple symmetric encryption to causes the public key and private key made available to or from the different handles. ठीक है, आप आगे कर लो। Both types of key are needed to encrypt and decrypt messages. We will use an example to explain how this works. Suppose Tom and Jane work for the same company and Tom wishes to send a confidential document to Jane. Jane uses an algorithm to generate a matching pair of keys, private and public, that they must keep stored on their computers. But the pointer first. Tom now uses Jane's public key to encrypt the document he wishes to send to her. He then signs the encrypted document ciphertext back to Jane. ये वाला नहीं समझ आ रहा, एस्टिमेटेड एन्क्रिप्शन। देखिए पहले था सिमेट्रिक, जी। ठीक है, इसमें सिर्फ पब्लिक की यूज होती है, एक ही की यूज होती है, इसमें पब्लिक की। यहाँ पे वो ज्यादा सिक्योर नहीं है, यहाँ पे जो एसिमेट्रिक है वो ज्यादा सिक्योर है। यहाँ पे दो की यूज होती है, पब्लिक की ये लिखा हो, प्राइवेट की। एक प्राइवेट, ठीक है ना। तो अगर दो की यूज होंगी तो पहले पब्लिक की से ओपन करेंगे फिर प्राइवेट की से ओपन करेंगे। प्राइवेट की सेंडर के पास या रिसीवर के पास होती है, ठीक है ना। तो मेनली तो वो ही ओपन कर सकते हैं जिसके पास वो की होगी, इट बिकम्स मोर सिक्योर। इसीलिए इसका नाम असिमेट्रिक रखा हुआ। सिमेट्रिक का मतलब सेम होता है, असिमेट्रिक का मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है ना। ये लिखा हो ना, पब्लिक की मेड अवेलेबल टू एवरीवन और प्राइवेट की ओनली नोन टू द कंप्यूटर तो यूजर। अगर कोई कंप्यूटर हैक कर ले तो उसके पास जो प्राइवेट की, प्राइवेट हाँ होगा बिल्कुल, की वाली। तो उसको हैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जो 1 2 3 4 करके लिखे हैं पॉइंट्स, ये याद करना। नहीं नहीं, बस हाँ स्टेप्स दिए हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद तो नहीं करना, अंडरस्टैंड करना। ठीक है। James is running private key to unlock strong document and decrypt it. This works well as public key used to encrypt the document and the private key used to decrypt it are matching a pair generated on Jane's computer. Jane can't use the public key to decrypt the message. ठीक है। Jane can also exchange her public key with any number of people working in the company, so she is able to receive encrypted messages which have been encrypted using her public key, and she can then decrypt them using her matching private key. अच्छा, अगर किसी की प्राइवेट की के अंदर बाकी सबकी कीज हो तो वो उससे भी हैक हो सकते हैं, मतलब 5 6 लोगों की जैसे इसमें दी हुई है हाँ सबकी सकते हैं। बिल्कुल। However, for two-way communication is provided between all five workers, and they all need to generate their own magic public and private keys. Once this is done, all users then need to swap the public keys so that they can send encrypted documents, files, messages between each other. Each worker will then be used their own private key to decrypt information being sent to them. ठीक है। ये चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन कर ले। ठीक है।
ठीक है, company owns a number of vending machines that are sent from each of these machines at the end of the day. The data contains amount of money taken, product sold, and एक second. अच्छा. The company taken products sold and any error conditions or reports. The company uses both echo checking and automatic repeat request. Describe how echo checks work. Explain whether this is a suitable error checking method in this application. Check क्या करना है? Data is sent from each of these machines for the input. अच्छा, echo checking हमने पढ़ा था parity check, echo check, echo checking का कहाँ था? हम्म, इसमें इको चेक के बेनिफिट्स बताने हैं या फिर इसके जो वर्किंग है ना, हाउ इट वर्क्स। प्रोसेस? आपकी आवाज कट रही है. हाँ, मैंने कहा उसकी वर्किंग बतानी। अब आ रही आवाज? जी अब आ रही है. हाँ, उसकी वर्किंग बतानी। वर्किंग बतानी, ठीक है. इको चेक की बनानी है. जी। इको चेक में अगर इसमें कोई एरर आ जाए तो वो जो डाटा होता है वो डाटा इज सेंड बैक टू द सेंडर. And then the data which has been returned has to be compared with the original data which has been sent by the sender's computer or sender's device. Agar, if there are no differences in the data which is sent without error, then they are different. And if an error has occurred during the data transmission, then it needs to be rechecked or resent by the sender. ओके, अभी देख लेते हैं। ठीक है, इस उत्तर नहीं है. हाँ, डेटा इज रिटर्न टू सेंडर। सेंडर कंप्यूटर कंपेयर द टू सेट्स ऑफ डेटा। ठीक है। इफ एनी एरर फाउंड, Then data is resent. This didn't make it a very suitable method for this application. मेथड और मेथड। ठीक है, मैंने भी सही बताया. ठीक है। Describe how automatic repeat request ARQ works. ARQ इसका प्रोसेस बताना है. हाँ बिल्कुल वही वर्किंग। ठीक है, ARQ में एक्नॉलेजमेंट्स होते हैं जो रिसीवर जो होता है अगर उसने डाटा सही रिसीव नहीं करा था, द रिसीवर हैज नॉट रिसीव्ड द डाटा करेक्टली, then it has to allow the device to receive an error detection. हाँ नहीं, एक तो होता है ना कि वो If सेंडर वेट you करता है एक सर्टेन टाइम के लिए कि वहाँ का ओके की एक्नॉलेजमेंट आ time. जाए। हाँ, एक्नॉलेजमेंट आ जाए। अगर नहीं आती तो खुद भेजना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर there is no data detected, then a positive acknowledgement is sent back to this sending device. If there is an error detection, then the receiving device will to send a negative acknowledgement and has to request for the retransmission or to resend the data. ठीक है। And timeout is important in this. If timeout is used by the sending device, then they have to wait for the amount of time, certain amount of time, ओके। and then it automatically resends the data. अब ये देखें। एक second, ठीक है, ARQ uses acknowledgement and timeout when receiving device detects an error following the transmission and asks for the data to be resent. If there are no errors, a positive acknowledgement is sent to the sender. ठीक है, मैंने positive और negative दोनों का बता दिया. ठीक है। The sending device will resend data if it receives a request to resend data or a timeout has occurred. The whole process is continuous until all data packets receive are error-free or until the timeout is reached. इसमें timeout का ख्याल रखना पड़ता है. हाँ बिल्कुल। ठीक है. अब ये नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो. ये मैंने कर दिया है ऊपर।
फ्लैश हुआ? ठीक है, आ गया. Checksum and checkdigit are two terms often confused by students. Describe three differences of the two techniques. Checksum और checkdigit. Checkdigit पढ़ा था हमने. अच्छा, आपने checkdigit में कोड होता है. ठीक है, ठीक है. की अच्छा, checksum. अच्छा, differences बताना है. In checksum, the method is used to check the data has been changed or corrupted. And in checksum, the data is signed in data blocks. And और उसमें an additional value has to be sent with checksum in the end of the data block. ठीक है, इसके तीन डिफरेंसेस हो गए. और किसके हैं? चेक डिजिट. चेक डिजिट में तो कोड वाला होता है, डिजिट वाला. Check digit check digit consists of a final code. It is calculated from all the other digits in the code. It has और किसमें होता है वो QR नहीं. Check digit is commonly used in barcodes. जैसे वो हमने पढ़ा था ना वॉली बुक की IS ISB ISBN. ISBN जी, उसमें यूज होता है वो. ठीक है. And the methods to verify check digit for check digit are modulo 11 and ISBN 13. ठीक है, Verify data. ये देखें इस तरह डिफरेंस है. Checksum calculated from the block of data. ठीक है, send with block of data recalculated at the receiving station. If different an error has occurred, used to check errors following data transmission. ठीक है, मैंने first, second और last वाला बताया. Check digit, final digit included in the code, calculated from the other digits in the code, used to check for errors during data entry. During data entry, detects errors such as transposition, missing or extra digits and so on. अच्छा, इसकी वो नहीं बतानी थी methods जो होता है. नहीं डिफरेंस लिखा ना, तो दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे. जैसे लिखा ना, कैलकुलेटेड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ डेटा, फाइनल डिजिट इंक्लूडेड इन द कोड, जैसे आपने बताया था. और डिफरेंस हमेशा ऐसे बताते हैं, सेंड विद ब्लॉक ऑफ डेटा, कैलकुलेटेड फ्रॉम द अदर डिजिट इन द कोड. इस तरह कंपेयर करना. ठीक है. कैलकुलेटेड रिसीविंग स्टेशन आई यूज्ड टू चेक फॉर एरर ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर. अच्छा, अगर पेपर में डिफरेंसेस आ गए, ये पीछे करेगा क्वेश्चन. अच्छा, 3 मार्क्स का है, तो हमें बस तीन डिफरेंस है. 3 डिफरेंस बताने, मतलब 5 वर्ड्स 4 वर्ड्स में पूरा हाँ, डिस्क्राइब करना, पैसेज बना. ठीक है, 3 सेंटेंसेस में. ठीक है. 8 descriptions are given in the following table. The table columns are labeled checksum, parity check, and ARQ. Take the appropriate column which correctly matches each description to the error statement. आप मोबाइल पे हैं या लैपटॉप पे हैं? लैपटॉप तो आप इसको राइट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं इसको. कर सकते हैं. टिक कर. ठीक है. Extra bits sent with each byte of data. Make use of timeout and acknowledgement. Timeout and
कितना सा होगा? ठीक है, कर लिया मैंने। ये एक रहता है सेकंड लास्ट। ये वाला नहीं आ रहा। ऐसा नहीं आता। यानी वन बाय वन चेक करते हैं। पहला आपने चेकसम किया है। बेसिकली चेकसम नहीं है, पैरिटी चेक है। ईच बिट सेंड विद ईच बाइट ऑफ डेटा। ठीक है। ठीक है, और दूसरा आपका यार। ए आर क्यू। ए आर क्यू आगे नजर नहीं आ रहा। हम्म, अच्छा वो नीचे हो गया। ठीक। वो ऊपर नीचे हो गया। हाँ ठीक है, तो ये भी सही है आपका। तीसरा आपका चेकसम है, तो इसमें ए आर क्यू आएगा। तीसरा ए आर क्यू। इस फाउंड रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन पर रहता है। ठीक है। और उसके बाद आपने पैरिटी चेक किया, तो ये भी नहीं, ये भी गलत है। ये चेकसम और ए आर क्यू। अच्छा, दो भी हो सकते हैं। ठीक है। टैक्स हमारा क्यों? फिर बाद आपने क्या किया, ये छोड़ दिया आपने, रिकैलकुलेशन में छोड़ दिया आपने। दो छोड़ दिया मैंने। रिकैलकुलेशन ऑफ मेल ऑन एनी एडिशनल डेटा वैल्यू सेंड टू द रेसिपिएंट। अब तो पैरिटी। के अंदर आएगा ना ये दोनों में से। ये चेकसम पैरिटी भी होगा या पैरिटी चेक होंगे। डेटा इज ट्रांसमिटेड, इसमें है चेकसम। और लास्ट वाला है। ये दो हो सकते हैं, आपने तो ये किया, लेकिन ये दो हो सकते हैं। ए आर क्यू ब्लॉक्स ऑफ है। लास्ट वाला बता दो। चाहे सेकंड लास्ट आपने किया, तो ये है पैरिटी चेक। विच विच मेथड रिमाइंड विच बिट एंड अदर चेंज पैरिटी चेक। ठीक है। उसके बाद आपने किया ये एडिशनल वैल्यू, ए आर क्यू। ये बेसिकली चेकसम है। Additional values sent at the end of a block of data to be used to check if any transaction errors occurred. Checksum। ठीक है, मैं रिवाइज करूंगी चैप्टर, फिर ये वाले क्वेश्चन गो थ्रू कर लूंगी। Four statements about automatic repeat request ARQs are given below. अच्छा, but they are not in the correct order. Put the statement into the correct sequence. The sending computer waits for a period of time to see if the receiving computer acknowledges the receipt of the data. After a set time period, timeout occurs. This continues until the sequence rundown. The sending computer waits for a period of time to see if the receiving computer acknowledges the receipt of the data. After a set of time period, timeout occurs. Automatically triggers the sending of the data. The sending computer transmits a block of data to the receiving computer. ठीक है, मैं कर देती हूँ इसको यहीं पे। ये वाला आपका सिर्फ sending computer ये हो गया ओपन। The sending computer waits for a period of time to see the receiving computer acknowledges the receipt of data. This continues until the receiving computer sends an acknowledgement that the data has been received. पहले क्या होगा, ब्लॉक ऑफ डेटा टू रिसीविंग कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद आफ्टर सेट पीरियड ऑफ टाइम टाइम आउट अकर्स। उसके बाद सेंडिंग कंप्यूटर विच आर पीरियड ऑफ टाइम to receive computer acknowledgement of the data is continuous until the receiving computer sends an acknowledgement and the data has been received. ठीक है, कर लिया। 4213 है। ठीक है। 3124। हाँ 3124। तो दोबारा देख रहे हैं। थ्री आप आपने पहले ही किया थ्री। आपने क्या 423 किया। 4213 कर दिया मैंने। 3124। द थ्री पहला सेंडिंग। होगा, थ्री पहला होगा। आपने वन तो लिखा है यहाँ पे। थ्री पहला होगा, सॉरी, फिर वन सेकेंड होगा, टू थर्ड होगा, और फोर्थ होगा।
गलत करा। नहीं, ये देखें ना आपने, 3 पहले आएगा, आपने 3 पे 1 लिखा है ना, हम्म। ठीक है, और उसके बाद वो क्या रही, 1 सेकंड हम्म, का है, 1 सेकंड का है, आपने इसको 4 किया है, सेंडिंग कंप्यूटर वेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टू सी इफ द रिसीविंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिसीव हो गया। ठीक है, पहले सेंडर कंप्यूटर वेट करेगा, फिर शायद 2 है। हाँ, उसके बाद 2 थर्ड पे आएगा, आफ्टर सेट टाइम पीरियड टाइम आउट अकर विच ऑटोमेटिकली। सेंड होगा, फिर टाइम आउट होगा, और फिर वो जो हाँ, लास्ट वाला कंटिन्यू तो करेगा। 4 वाला 4 पे आ रहा है, कंटिन्यू discontinue until the receiving computer sends an acknowledgement that ये लगता uh, है। Five statements about checksum error checking are given below, but they're not in the correct order. Take a second. कहाँ से देखो screen? एक सेकंड नोट नीचे। Screen चली गई। Yeah, we have statements about checksum error checking are given below. ठीक है, but they are not in the correct order. अच्छा, checksum है और checksum error checking है। अच्छा, checksum है। If the two checksum values don't match, the receiving computer tries the data to retransmit. क्या होगा? अच्छा, सर मैं ये कर दी हूँ, बोर्ड पे मैं लिख देती हूँ। हाँ हाँ, बोलो। ठीक है। मेरा स्क्रीन चली गई।
ठीक है मैंने कर लिया। ठीक है, ये देख लीजिएगा। 5 2 3 4 1। 5 सही है, 1 आपका गलत है, 3 सही है। 5 2 3 4 1 है, मैंने 5 1 3 4 2 लिख दिया। ठीक है। अच्छा पांच रुपए के क्वेश्चन है। हाँ, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। Questions about parity checking are given below, but they are not in the correct order. Put this moving to the correct order. Some finding the videos and dividing the time during the parity device. Understanding the saving of videos है कि उसको बोल दो मैं 4 से 6 मेरी क्लास है केमिस्ट्री की। एक सेकंड। हो गया, जी मैंने कर लिया। ये देखें। 4 2 3 1 4 5। ठीक है 1 12 थर्ड का आएगा। ठीक है। Check digits. अच्छा, human operator asked for the computer to enter a numerical code. The computer calculates the check digit.
ठीक है, कर लिया मैंने। ठीक। 65243 पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। अरे सारा सीक्वेंस आउट हो गया। पीछे वाली स्क्रीन करेगा। ओ भाई, One human operator will be asked for the indicator to enter a numerical code. ठीक है। No, it looks like this is solution of the numerical code. 6 by the 5 and then operator types in the numerical code into the computer. 652 that is the value is the check to the system. And then the human computer, the computer is ठीक है। ठीक है। Oops. Yes, delete. इसको मार्क कर लेंगे। These descriptions are shown on the left and then computer turns on the right but on the chart. A method of error detection, a value is calculated from a block of data and is sent with the block of data during data transmission. During data transmission, serial data transmission is allowed us to communicate with the computer has become the industry standard. Data error occurring when data arrives at the destination after some transition. Skewed data. The transmission method to data sent 1 minute at a time over a single channel wire. Simple duplex. Parity, serial encryption, and also check digital duplex. A method of error detection is based on warning when the offender is dimensional is between the byte. ठीक है, सेकंड वाला नहीं आ रहा मुझे, बाकी सब कर लिया। चेक कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सा सही है आपको। जैसे आपका जो लेफ्ट है वो थर्ड पे आ रहा है, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। तो लेफ्ट वाला जो फर्स्ट वन जो है हाँ वो ठीक है, आपका भी ठीक है। सेकंड वाला करा नहीं मैंने, थर्ड वाला है फुल डुप्लेक्स। थर्ड वाला फुल डुप्लेक्स, ये भी सही है। और है पहले वाला हाफ डुप्लेक्स। ये भी ठीक है। और लास्ट का यूनिवर्सल, हाँ ये भी ठीक है। अच्छा सेकंड वाला देख रहे हैं। ठीक है, मैं हाल से सेकंड वाला सब सही नहीं करा मैंने। वो पैरिटी चेक से आ रहा है, सेकंड वाला पैरिटी चेक से। ठीक है, बाकी सारे सही है। ये तरीके बनाने कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन 6? 6 मार्क्स। 6 मार्क्स का, ठीक है। गेनिंग क्वेश्चन। चैप्टर कौन सा था, 2? चैप्टर 2 हो गया हमारा। चैप्टर 2 हो गया। ठीक है,
चैप्टर कौन सा अब 7 है? 7 स्टार्ट करें। ठीक है, चैप्टर 7 और 10 नहीं, 7 और 8 है हमारा शायद फेब्रुअरी का। जी बिल्कुल। अब हमारा चैप्टर 1 हुआ है, 2 हुआ है और 3 हुआ है। मतलब 2 और 3 आपने करा है, 1 मैंने पहले से करा हुआ है। अब हमारा एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग 7 और 8 है फेब्रुअरी का, और मार्च का हमारा 4, 5, 6 है। चैप्टर 4, 5, 6 आसान है। नहीं, जैसे 7 और 8 और 4, 5 ये हम कर लेंगे मार्च मार्च में ना, ठीक है। और फिर रिवीजन कर लेंगे, 6 जो है वो अप्रैल में करेंगे। 6, 9, 10 हो जाएंगे, 9, 10, 6 अप्रैल में हो जाएंगे। चैप्टर 6 आसान है। हाँ आसान है वो, आसान वो हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ एक सेकंड लगेगा। तो चैप्टर 7 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना। ठीक है, चलो मैं अपनी पे केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्लास पे ट्यूसडे को। हाँ इंशाल्लाह ठीक है। ठीक है, मैं आपकी फीस ट्रांसफर करवा देती हूँ। ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज़।